పార్లమెంట్ సమావేశాలు రాజ్యసభలో ఏం జరుగుతుందో ఒకసారి లైవ్ లో చూద్దాం. I am only saying, if you want to discuss this issue which has been raised by Honorable Digvijay Singh, that is the conduct this way or that way. No, please, the conduct this way or that way, or the governor. If you want to discuss, please give a formal notice. Substantive motion, it is under rule. Please give a formal notice. I will request the Honorable Chairman also to allow it. We can have discussion anytime, no problem. But this is not the way. రాజ్యసభలో కాంగ్రెస్ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. గోవా ప్రభుత్వ ఏర్పాటులో గవర్నర్ పాత్రపై చర్చించాలంటూ కాంగ్రెస్ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు. అయితే దీనికి డిప్యూటీ చైర్మన్ కురియన్ ఒప్పుకోకపోవడంతో కాంగ్రెస్ ఎంపీలు పోడియం వైపు దూసుకొచ్చి నినాదాలు చేస్తున్న దృశ్యాలను చూస్తున్నాము. వాళ్ళకి సర్ది చెప్పే ప్రయత్నం ప్రస్తుతం డిప్యూటీ చైర్మన్ కురియన్ చేస్తున్నారు. No. Sir, I have the greatest regard for the chair. And as you know, I've been in legislative business since 1977. Yeah. Therefore, sir, my request is that this is not an allegation. This is a statement of what she has made publicly. Okay. Number one. Then why not you give a motion? Sir, hear me out. Sir, please hear me out. Again, I have made no allegation. The point is, Mr. Arun Jaitley is a member of this house. He has a right to reply also. So therefore, he is not covered. He is not covered by Rule 238. But sir, I am not making an allegation. I want to raise this issue in the public domain through this august house that she has not only. Then give separate notice, okay? Sir, instead of creating a problem in 0 hour, give separate notice. Okay. Why in 0 hour when you are unnecessarily encroaching on the time of others? I agree with you, sir. You Sir, give, even for that notice is required. We will give you. Even for that notice is required. I am only saying that. Give a substantive motion to be taken up on. No. Even if you want to discuss the conduct of the leader of the house, for that also we should have intimation. We should have notice. You should have notice. That also can only go by rules. You cannot see. One cannot just suo moto all on a sudden say I have this allegation against a minister or XY and then discuss. No, I am not allowing. I am not allowing. I am not allowing. Sri Harivansh. Sir. I am not allowing. Why you want? I will adjourn the house. No, please. I am not allowing. Yes, what is the point of whose? Sharad Yadav ji. बहुत अदब से आपके सी परमिशन से सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि जब चेयर से ये हो गया कि सबसे ने मोशन लेके आई है, इसके बाद जो है वो कोई सवाल नहीं उठता है। मैं आपकी रूलिंग से पूरी तरह से सहमत हूँ। अच्छा। और मैं विनती करूंगा आपसे कि ये मोशन के रूप पे आप सोमवार। अच्छा, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि आर्टिकल 164 में गवर्नर अपने को एडवाइस करने के लिए मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री को गठन करता है। इसका मतलब वो मुख्यमंत्री उसी को चयनित करेगा जो दल सबसे बड़ा हो। क्योंकि नहीं देखिए उसमें उसका इंटरप्रिटेशन करिए। ऐसा नहीं गवर्नर किसी को बुला लेगा। नहीं गवर्नर इसलिए मैं बोलता है या किसी को बुला लेगा। इसलिए मैं आर्टिकल 164 अरे यही बोलते हैं ये मेरा काम नहीं है। गवर्नर का काम मैं कैसे कर सकते हैं? मेरा जो मेरा काम नहीं है। अगर गवर्नर गलत करता है तो कौन बोलेगा? If there is problem, you give notice. Substantive notice. Honorable Chairman will consider it. Yes, Honorable No, sit down. Sir, can I suggest something? Nothing more. Sir, can I suggest something? No. Can I suggest something? Okay. The Honorable Chair, the Deputy Chairman is saying that we should give a substantive motion. Agreed that we'll give a substantive motion. Can the House be adjourned for 1 hour so that we can give the substantive motion? No, please. Harivansh. Sri Harivansh. उसकी स्थिति क्या है? उदाहरणों से सदन के माध्यम
सरकार और देश के सामने रखना चाहूंगा। पहला बैंक का निर्णय कि विभिन्न खातों में न्यूनतम मिनिमम बैलेंस या औसत बैलेंस न रखने पर बैंक ग्राहकों से पेनाल्टी और पब्लिक सर्विस टैक्स लगाएंगे। यह खबर पहले आई थी, पर जन विरोध को देखते हुए संकेत मिला कि केंद्र सरकार शायद आम जनता के हित पक्ष में खड़ी होगी। पर 2 दिनों पहले भारतीय स्टेट बैंक के चेयरमैन का बयान पढ़ा कि हमें केंद्र सरकार से ऐसी कोई सूचना सलाह नहीं मिली है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 11 करोड़ जनधन खाते मेंटेन करते हैं, यह फाइन पेनाल्टी लगेगा ही। यह मात्र एक पेनाल्टी है। फंड ट्रांसफर, चेक देने, एटीएम चार्जेस में रिवीजन वगैरह के नाम पर तरह तरह के शुल्क कस्टमर दे रहे हैं। सभी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों द्वारा, खासतौर से प्राइवेट बैंकों द्वारा नोटबंदी के दौरान खुली लूट हम सबने देखा। क्या सरकारी निजी बैंक जनहित के लिए है या जनता पर तरह तरह के टैक्स लगाने वसूलने के लिए? और पैसे वाले जो अरबों की राशि उधार लेकर भाग जाते हैं, उन्हें भी दंडित करने की कोई व्यवस्था 70 सालों में हमने बनाई है। इसी तरह भारतीय रेलवे के न्यू डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल का हाल है। रेल टिकट महंगे हो गए हैं। यही हाल भारत में चलने वाले एयरलाइंसों का है, खासतौर से प्राइवेट एयरलाइंस की है। न्यूनतम सुविधा अपेक्षित है। बेचो, अवसर मिले तो भाग